Thank you very much. Thank you, Bhushanji. Thank you very much. Uh, Now I request Rudramoy Chatterjee to present his speech. Thank you, sir. Yeah, you can share the screen. Can you see my screen? Yeah, you go to slide mode. It's okay. Fine. Good evening, everyone, and thank you, Dynamic Foundry Group, for giving me this opportunity. Myself, Rudramoy Chatterjee, son of late Kalisankar Chatterjee from Howrah, West Bengal. I was born on 14 February 1982. Presently, I am working in Yasi Foundry Tool as a planted Howrah. Now, I am selected here for talking about my journey. So my journey has divided in two parts. One is down, second one is up. If I go through on my life, that in 2001 I ranked 9,000 plus in joint entrance examination. After getting this opportunity, my father admitted me in Techno India, Kolkata, in information technology. From here you can see my educational journey start with software industry, but now I am in a foundry group. All the things was going right, but in the year of 2002, my father died. The dark phase of my life has been started. Education stopped due to the financial issue. At that time, I started job as a data entry operator. And later that, in morning and the evening, and I started part-time tuition only to intention to earn money. At that time, no one has been, or I was only the earning member in my family. In 2003, after the 8 month of job, I started my new business, new printing business with purchasing one offset machine. It is continuing 2 years, but still there is something in my mind that is engineering, something in my mind that engineering troubling me. In 2006, once again, I have started diploma in mechanical engineering from ICB Polytechnic in West Bengal. It is situated in Jhargram. After that, my graph is in upside. In 2009, I have completed my diploma. After completion, I have joined GS Engineering Private Limited as a floor supervisor. Basically, this is a bridge manufacturing company, and we are work for PWD drawing in and make 14 bridges in Eastern India. After joining the GS Engineering, within 2 months, my senior left the job, and it's my good luck that I have the full access of the whole unit. Whole the drawing is in my hand. So after completing 2009, and after 2 months, I have working with the full 100% drawing of a bridge manufacturing company. In in this company, I worked 3 years and 9 months. After 3 years and 6 months, I felt that there nothing something new to learn. So I have to change. I have to change for myself. In 2003, I joined my present company where I work right now, Yasi Foundry Tools. Basically, it's a molding equipment or the foundry equipment manufacturing company. We make the mold boxes, pallet cards, match plate, accessories, ladders, all the things over here. But my mind is something I am little bit ambitious, something extra in my mind. I thought what I am thinking that is not reached with my diploma degree. So I have started my BTech Mechanical Engineering degree, BTech Mechanical from distance, from Dr. MGR Educational and Research Institute in Chennai. In 2014, I made a ladies beauty parlor for my wife in local market. Uh, to making of this, that why what is inside my mind? Because I work in a private sector, there is nothing. I didn't believe that the private sector have a good future for me, or any day anything can be happen. So I need a parallel base and start a beauty parlor and give her a chance to create his own world. And as the time flows, in 2016, I completed BTech from Dr. MGR Education and Research Institute in Chennai. Very next year, in 2017, I have started the MTech Mechanical Industrial Engineering from the same college.
in 2019. In 2019, some extra opportunity has came in front of me. As a travel business, we purchasing two cab, and I purchased two cab, and my brother has taken care of this. So in this travel business, I didn't look after anything. Just I have invested, and it is running, and it is earning money for me. Now still I am working as a plant head, as a important role nucleus of the company at my current company, ESC Foundry Tools. Now journey in Foundry. Basically, my professional journey divided in two parts. First is I have already worked with two companies. One is GS Engineering, second one is this. So first company is a totally non-foundry company. Last company and the running company, ESC Foundry Tools, what I work in last 7.5 years, it is a foundry related company, and I work here 7.5 years. So when I joined this company, foundry is totally new. So at that time, I was nothing new about the foundry. Just know that foundry is a melting section, melting. From melting to here, we have to put the SG iron, cast iron. As what I have read in the book only, there is no physical experience about the foundry at that time. But due to this journey, we have made some extraordinary job. We make the double wall SG iron molding boxes with the collaboration of Rhino and the ESC Foundry Tools. In this section, starting from the designing, drawing, molding process, pattern with multiple code, high precision milling, high precision drilling, with extra clamping features, all have been passed through my hand. Really, it's a great achievement for me that I have a part of this success. We made that double wall SG iron molding boxes first time in India. We are also regular in cast iron and mild steel molding boxes for the Joule squeeze and high pressure molding boxes. We have already supplied 150 plus projects in India and overseas. We are regular manufacturer of the pellet car for Joule squeeze and high pressure molding machine. Also in the flash press line like Disa Match and Disa Flex also. In molding accessories, we also provided that with the specific tolerance, specific material, and we are due to the multiple R&D. Now we are very much strong in the molding accessories. Life of the molding accessories, which kind of push will last long, which kind of pin will last long, and how tolerance which tolerance the molding defect will be lesser. We also started the manufacturing of the ladles. So that is the journey with my foundry. Now what next? What next in my life? Due to my ambitions and what I just work in last 7.5 years. During these days, I have visited 30 foundries across the India. And during that visit, somewhere I feel that the hot metal handling system is not good. Somewhere the sand handling system is not good. Distance between the pouring line and the pulling line is not sufficient. In everywhere, the provision of the single side pouring and the double side pouring is not available. In some cases, the double side pouring is required in a plant. Then what should they do? Because there is no provision of the double side pouring option. So in my mind, there is two things. One is to designing a foundry. Second is to run a foundry. Designing a foundry is most important factor. If we design a foundry in proper way, at that time, the run of a foundry will be much easier. So I always consider designing of the foundry is a most important part, and my future target is to design the foundry with 100% whatever the GKO I have got it with that precision. So I have take myself on 5 or 6 years. After 5 or 6 years, I will design a foundry with proper significant challenges. Now that was my life, and that is my active expectation. What I have learned from life in my life. Here is so many juniors. This is specifically for them. सपोज आप लोग में जो भी हो जैसे भी हो आप लोग कहीं भी काम करते हैं और उस हिसाब से आपका
सैलरी नहीं होता है, या फिर आफ्टर आफ्टर पासिंग दैट कि आप उस हिसाब से आप जॉब नहीं पाते हैं। वट एवर द सब्जेक्ट शुड बी, आप नेवर गिव अप, आप कभी भी गिव अप मत कीजिए। लाइफ में बहुत अप डाउन आएगा, मान चलिए लाइफ में अप डाउन आएगा ही, डाउन आएगा ही, डाउन सिचुएशन के लिए तैयार रहिए, नेवर गिव अप। अगर my life has been in downside at the age of 19, at the age of 38 I am standing up somewhere, but somewhere किसी का लाइफ में 30 साल में आ सकता है, किसी का 35, किसी का 40, 50, whatever the subject, whenever the difficulty has come, never give up, love your job, this is the main part, this is the main part, this is the missing in this sector I have found। जो कोई भी लास्ट में, अभी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैं लास्ट 7 साल में 30 फाउंड्री में विजिट किया हूँ। ये जो मैं विजिट किया हूँ वहाँ पे जब भी जाता हूँ, आई हैव नॉट डिस्कस्ड विद, आई हैव नॉट द गेट अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस विद द सीनियर लेवल पीपल, आई ऑलवेज डिस्कस विद द जूनियर लेवल पीपल। यहाँ पे जाके मैं सबके साथ जब भी बात करता हूँ, एवरीवन सेज कि यहाँ पे ये सही नहीं है, इस फाउंड्री में वो सही नहीं है, उस फाउंड्री में वो प्रॉब्लम है। डोंट थिंक इन दैट वे, डोंट रेज हैंड टू अदर्स। आप अगर मतलब कुछ करना चाहते हैं तो अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। व्हाट आई कैन डू फॉर इट, मुझे क्या करना है, डोंट रेज हैंड। कुछ कर सकते हैं तो करिए, लव योर जॉब। आप जॉब को जब प्यार करने लगेंगे तो जॉब आपको रिवर्स भी प्यार करने लगेगा। लुक लाइक आई एम गिविंग माई एग्जाम्पल, मैं ऐसी फाउंड्री टूल्स में करंट कंपनी में जब ज्वाइन किया था, मेरा पहला चार्ज हुआ था कि मशीन शॉप को कंट्रोलिंग। आप जानते नहीं है, टुडे द मशीन टॉक्स विद मी, इफ समथिंग इन, आज अगर मशीन में, अगर मशीन शॉप में मैं पहुंचता हूँ, उसका मशीन का साउंड सुन के मुझे पता चल जाता है वो कहाँ पे डिस्टर्ब है, क्यों हो रहा है, क्यों ये साउंड, यस दिस साउंड इज ओके। Hearing the sound, I can determine that this machine is running in a good condition. So आप अगर जॉब को प्यार करेंगे, जॉब ऑटोमेटिकली आपको प्यार करेंगे। सो आप अपनी जॉब को प्यार कीजिए, इसका आउटपुट आपको मिलेगा ही। nobody has taken care of it। नाउ मुझे जो लाइफ में मैं और एक चीज सीखा, दैट इज इंक्रीज योर नेटवर्क। नेटवर्क को इंक्रीज करना भी एक पार्ट है। अगर लाइफ आप सक्सेसफुली लीड करना चाहते हैं तो आपको नेटवर्क को इंक्रीज करना ही है। जस्ट लाइक मैं अपने लाइफ को ही बोल सकता हूँ, टुडे एट द एज ऑफ 13 व्हेन आई वाज इन डाउन, वहां से स्टार्ट करके आज की डेट में मेरा एक तो पैरेलल प्रिंटिंग बिजनेस है, वो भी एक तो नेटवर्क के थ्रू से, वहां पे ज्यादा टाइम मुझे देना नहीं पड़ता है। मेरा एक तो ट्रैवल बिजनेस है, वहां भी एक तो पैरेलल नेटवर्क पे मुझे वहां पे टाइम देना नहीं पड़ता है। मेरा एक तो ब्यूटी पार्लर है, दैट इज टोटली प्योर माय वाइफ, सो आई डोंट हैव टू गिव द टाइम। सो कुल मिला के I earned from that, but I didn't put effort on there. So आप नेटवर्क जब बढ़ाएंगे, आपका लाइफ में सुधार आएगा ही आएगा। Be active and more active। यहाँ पे एक तो सब्जेक्ट है, everyone talking about the be active, I also subject about it, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर है। आप अगर एक्टिव नहीं काम करेंगे कहीं भी, कोई कंपनी आपको नहीं रखेंगे, दैट इज नॉर्मल। एंड डोंट थिंक अबाउट द कंपनी, इफ इट्स योर कंपनी, अगर आप अगर एक्टिव नहीं रहेंगे, ये कंपनी नहीं चलेगा। आपको अगर एक्टिव रहना ही है, व्हाई द मोर एक्टिव सब्जेक्ट वर्ड, दैट इज माय वर्ड। आप जो भी करेंगे, मोर एक्टिव फॉर यू। I am talking about the all employees over here, जो काम करते हैं। एक्टिवनेस फॉर द सस्टेनेबिलिटी एट योर कंपनी, आप कंपनी में रहने के लिए एक्टिवनेस चाहिए। मोर एक्टिव फॉर यू। जैसे कि मैं बोलता हूँ, मैं 30 कंपनी में विजिट किया हूँ। मैं 30 कंपनी में क्यों विजिट किया था? आइदर दैट द मोल्डिंग इंस्पेक्शन सब्जेक्ट, आइदर मोल्डिंग डिफेक्ट सब्जेक्ट, मोल्ड defect subject, either the marketing of a new mold box, whatever the subject, all should be related to mold box। लेकिन मैं जाके क्या करता था, मेरा जो मोल्ड बॉक्स सब्जेक्ट था, मोल्ड बॉक्स सब्जेक्ट के बाद आई गेट द 30 मिनट्स और 40 मिनट्स टू रन टू सी द फाउंड्री, बिकॉज आई गेट द अपॉर्चुनिटी। वो फाउंड्री को मैं देखता हूँ, मशीन कैसा है, मशीन को देखता था। मशीन के देखने के बाद मैं कोडिंग लाइन और कूलिंग लाइन में क्या डिफरेंस है, कितना लेंथ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू मशीन, मैं ये सब में ज्यादा ध्यान देता था। उसका सैंड हैंडलिंग सिस्टम क्या था, मोल्ड हैंडलिंग सिस्टम क्या था, हॉट मेटल जो ट्रेवल कर रहा है वो सही है, इसको क्या कर सकते हैं। आई हैव जस्ट टेकन ऑन दैट, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू 1 or 2 days। मैं इतना साल से, लास्ट 7 ईयर से देखते 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 आज आया, आज मैं किसी फाउंड्री जाता हूँ, कुछ ना कुछ डिसीजन ले पाता हूँ या फिर सोच सकता हूँ। तो मोर एक्टिव फॉर योरसेल्फ, आपको खुद को जानने के लिए आपको एक्टिव रहना ही पड़ेगा। ऑलवेज थिंक फॉर अल्टरनेट इनकम। यस, हम लोग सब भी जो भी आए हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जैसे भी है, ऑल आर रिलेटेड टू द इनकम। आफ्टर द फाइनेंस इज एवरीथिंग।
So always think of an alternate income. Find your ikigai. Ask your ikigai. In which section you are strong. आप जिस सेक्शन में strong हो, उस सेक्शन में आपको इनका alternate income के बढ़ाना चाहता है. Suppose look like in my concept, जो मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा लाइफ में मैं इंजीनियरिंग में स्ट्रांग हूँ, मैं इंजीनियरिंग किया हूँ. So engineering is my primary. For the secondary, I don't need to choose the engineering. Something which is not engineering, but something जहाँ पे मैं अच्छा हूँ. जो मेरा अपॉर्चुनिटी है, मैं ट्रैवल बिजनेस में मैं इन्वेस्ट किया. अपॉर्चुनिटी है मेरा प्रिंटिंग में, वो प्रिंटिंग में मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, वहां पे मैं इन्वेस्ट किया. लुक लाइक दैट. क्योंकि प्लान बी इन इनकम इज ऑलवेज रिक्वायर्ड. What I am trying to say that is income in plan B is always important. Suppose plan A is failed, किसी भी कारण से मेरा जो सर्विस है किसी भी कारण से ये खराब हो जाए, तो क्या है वो प्लान बी मुझे सस्टेनेबल रखेगा. दिस इज योर प्लानिंग, और कुछ नहीं है. लास्ट, द लर्न एंड मोर लर्न. ये मेरा मानना है. मैं पढ़ने में बहुत प्यार करता हूँ, पढ़ता हूँ, और सो ये सब में मैं एक चीज मानता हूँ कि आप जितना पढ़ेंगे वो आपको रिटर्न देगा. पढ़ना मतलब ये नहीं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. इफ यू आर वर्किंग इन सम सेक्टर, उस सब्जेक्ट में पढ़िए. आप अगर वीएमसी में काम करें तो वीएमसी, व्हाट इज द वीएमसी, व्हाई द प्रोग्राम, व्हाई द 2 डिग्री ड्राफ्ट, 1 डिग्री ड्राफ्ट, क्यों, तो कौन सा टूल से क्या करें. एक दिन का बात नहीं है, आप उस सब्जेक्ट में पढ़िए. इफ यू लर्न मोर देन यू विल बी सक्सेसफुल. आप अगर लर्न करते हैं वो आपको रिटर्न देगा ही देगा. दैट इज सो. किसी भी सब्जेक्ट को सॉल्व करने के लिए मेरा हिसाब से लर्न करना बहुत जरूरी है. Now that is my life. That is goes way. So I want to give the special thanks. Special thanks throughout my life is to my mother, Madam Anima Chattergy. उन्होंने मुझे सिखाया how to fight with the world, how to swim across the wave. कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर कोई आदमी आता है तो उस सिचुएशन को कैसे रिकवर किया जाता है. द इंस्पिरेशन वो मेरा मम्मी ने मुझे सिखाया. सो स्पेशल थैंक्स टू माय मदर एंड स्पेशल थैंक्स टू ऑल माय कोलीग्स एंड सीनियर्स. Specifically in this case, I want to give special thanks to Pradeep sir, Mr. Pradeep Madhuguria sir, my MD, Manish sir, Sapanda, my senior, and all my colleagues. Deepak sir, my past director of Mr. GS Engineering. So I want to all give the special thanks to all my seniors, and thank you Sandeep ji, last of all, to giving me this opportunity. Thank you, thanks a lot, and thanks for listening for me. Thank you, Rudra. Thank you very much. It was nice journey and nice to listen you on this topic. Now I welcome Ruma Kinarivan Rao for her speech.